Okay, good morning everyone. Once again, welcome to social science lecture. Okay, so we will continue with chapter number 11 disasters. So, you come to know about what is the meaning of disaster in this chapter. So, what is disaster and what are the different types of disasters? Then we can broadly categorize disasters into two categories, that natural disasters and human made disasters. So, all the disasters which occur due to the natural forces are called natural disasters, and human made disasters are the mainly accidents or the accidents created or done by the humans to harm the other humans, and they also do this to harm the environment also. Okay, so let's see the different types of natural disasters. For example, earthquake, volcanoes, tsunami, cyclone, flood, droughts, landslide, avalanche, thunder, and lightning. So these are the natural disasters, and man-made disasters are fire, building collapse, industrial hazards, transport accidents, stampede, riots, and terrorist attacks, etc. We will also study about the chemical and biological disasters in this session. So let's have a quick recap of the chapter. So we discuss about the natural disasters, then we discuss the cyclones. Okay, what are cyclones? What precaution we should take? How we can prepare before cyclone hits? And what are the measures to be taken to mitigate the harm or to mitigate the effects? Then we studied about the earthquakes, how they are measured, their intensity is measured, how they are harmful, and what should we do, how we can plan ahead, how we can identify the safe places. So we discuss about the natural disasters, two, three natural disasters in this chapter. In human disasters, we come to know about some major accidents which occurred in the history. Then disasters caused by fire, what we should do if the fire broke out. Then we discuss the nuclear disasters, okay, that how they are very harmful for the existence of life on earth. So they are very much harmful. So, so nuclear disasters are the most dangerous disasters that can happen. Now today in this chapter we are going to discuss the chemical disasters and the biological disasters. So let's see what are chemical disasters. So serious chemical accidents which have occurred around the world have released hazardous substances into the environment, due to which our environment is vulnerable to potential dangers. Okay. तो क्या होता है कि हम बहुत सारे जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी, और जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इन केमिकल्स को यूज़ करती हैं। तो हो सकता है कई बार एक्सीडेंटली
वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, जैसा हमने पढ़ा था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में पढ़ा था ना, भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में 1984 में, जिसमें गैस रिलीज हो गई थी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो इसी तरह के जो केमिकल हजार्ड्स हैं, और इनको हम जो है विलफुली टू हार्म और एनिमी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी केमिकल्स का यूज़ हो सकता है। सो इन दिस वे chemical disasters are also a threat to the human life. Signs of chemical threat. So what are the signs of chemical threat? Watery eyes, itching, choking, breathlessness, or loss in coordination. So these are the signs that you have come in contact with some type of chemical which is dangerous for you or for your body. Birds, fish, or small animals fall sick or die. Okay, they also create problems for other living organisms also. If you have been exposed to a hazardous chemical, you will feel irritation in your eyes. Your skin will sting and you will become breathless. If that happens, remove your clothes and wash yourself with soap, but do not scrub the chemical into your skin. Get medical help as soon as possible. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें केमिकल रिलीज होता है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले अपने क्लोथ उतारो, अच्छी तरह साबुन से जो है वो नहाओ। ठीक है, वॉश करो उस जगह को जहाँ पर केमिकल लगा है, फिर जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करो। ओके, actions to be taken during a chemical attack. Sometimes the chemical may also be used as weapon. ठीक है, केमिकल्स को वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है अगर केमिकल्स को वेपन्स की तरह आपके ऊपर फेंका जाता है, देन व्हाट यू कैन डू और व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स यू कैन टेक। Try to find out the extent of the impacted area or the source of the contamination. So the most important thing you have to do is to know that from that chemical is being released and get yourself away from that area, and also know the impact area. Okay, so get out of that area, get away from the affected area. If you are in a building during a hazardous chemical accident, get out of it as quickly as possible and take shelter in a place far away from it. ओके, अगर आपको लगता है कि आप बिल्डिंग के अंदर हो, वहाँ पर अटैक हो गया है, तो जल्दी से उसमें से बाहर आने की कोशिश करो और दूर चले जाओ। सो दीज आर द precautionary measures which you can take during a chemical attack. Now, in the same way as we can see the chemicals are being released, in the same way, some microorganisms can also be released into the environment to harm other human beings or living organisms. Okay, so the disaster or the harm created by destruction created by such activities known as biological disasters. So what are biological disasters? Biological disasters are caused by substances such as microorganisms, virus, bacteria, toxins, and medical waste that have biological source. These substances are hazardous to the health of living organisms, especially to humans. सो जो मेडिकल वेस्ट होता है उसमें भी कुछ बायोलॉजिकल सोर्स रह जाता है, चाहे वो ब्लड है आपका या कोई भी टिश्यू है, सो दैट कैन ऑल्सो मेक यू इल, यू कैन फॉल सिक if you come in contact with that thing. And also the virus, you know about the
coronavirus also. Okay, so chemical and biological disasters can occur if we release chemicals or biological elements in the environment. When disease causing germs such as bacteria or viruses are used to cause deliberate harm to others, they are termed as biological weapons. Toxins and poisons that are derived from biological sources such as the botulism toxin are also considered as biological weapons. जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में किसी दूसरे को हार्म करने के लिए, तो हम तब ये बन जाते हैं बायोलॉजिकल weapons. Sometimes germs or poisons are released as weapons through explosives such as bombs or missile warheads. कभी कभी हम इनको बॉम्ब्स में लगाकर रिलीज करते हैं, कभी कभी warheads में लगा के रिलीज करते हैं through missile, so that they can impact a larger area and harm more number of human beings. So that is called the biological disaster and biological attack. Anthrax was used in males by terrorists in 2001. This claimed the lives of postal workers in Washington, D.C. Sometimes hazards occur due to the release of infected humans or animals into public areas. So 2001 में क्या हुआ, अमेरिका में एंथ्रेक्स नाम का एक जो वायरस है उसको टेररिस्ट ने जो लेटर्स एनवलप्स होते हैं उनमें डाल के पोस्ट कर दिया, तो उसके कांटेक्ट में आने वाले जो पोस्टमैन थे या पोस्टल स्टाफ था, वर्कर्स थे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए. Sometimes hazards occur due to release of infected humans or animals into public areas. अब जो है इन्फेक्टेड ह्यूमंस और एनिमल्स को भी जो है पब्लिक में छोड़ा जा सकता है ताकि वो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आके उनको नुकसान पहुंचाएं, बीमार कर सकें, इफेक्ट करें, इन्फेक्ट करें. Potential targets of biological weapons include military personnel, civilians, water supplies, crops, stored food, and farm animals. Though biological weapons have the potential to hurt many people, there are many methods to prepare for and reduce the risk of attack and to respond effectively in the event of an attack. So, जो बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के, उसमें आपके मिलिट्री पर्सनल आ जाते हैं, सिविलियंस भी हो सकते हैं, वाटर सप्लाईज, क्योंकि आप वाटर का सोर्स है जो उसमें अगर किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस छोड़ देते हो तो सब पानी पिएंगे, उसमें यूज़ करेंगे, जो जो यूज़ करेगा वो कांटेक्ट में आएगा. उसके बाद क्रॉप्स में कर दोगे तो क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी, उनको कांटेक्ट में आने वाले ह्यूमंस इन्फेक्ट होंगे, एनिमल्स. इसी तरह स्टोर्ड फूड में मिला दोगे तो जो भी यूज़ करेगा वो इन्फेक्ट होगा, फार्म एनिमल्स में भी. तो देर आर पोटेंशियल टारगेट्स, बट बायोलॉजिकल वेपन्स अटैक हो जाता है तो उसको हम किस तरह से उसका सामना करना है, how we can face that attack. So measures to be taken in the event of biological disasters are following. First, during a biological attack, hazardous germs and other toxic substances may enter the body and may cause a contagious disease. The moment the symptoms are noticed among a large number of people, the matter must be reported at the local health care center. So, अगर ज़्यादा लोग एक ही तरह के डिजीज़ के सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सबको बहुत जल्दी लोकल हेल्थ केयर सेंटर्स में रिपोर्ट करना चाहिए. सो कैन गवर्नमेंट टेक द or the medical officers can take the necessary steps to control the contamination or infection. Be alert and cautious and tune into emergency news bulletin on radio or television. In rural areas, loudspeakers can be used for spreading warnings and awareness about the biological attack. So alert रहिए, cautious रहिए,
एमरजेंसी न्यूज़ बुलेटिन्स जो गवर्नमेंट या लोकल ब्रॉडकास्टर्स जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टेलीविज़न रेडियो के ऊपर, उनको सुनते जाइए और वार्निंग्स एंड अवेयरनेस को सुनिए, फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी सस्पिशियस और अननोन सब्सटेंस, डोंट टच और गो नियर इट एंड गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस क्विकली। कोई भी अननोन चीज़ है जिसके आप ऊपर आपको शक है, तो सब्सटेंस है कोई भी, उससे दूर रहो। Cover your mouth and nose with layers of fabric to avoid inhaling the suspicious substance. सो अपने फेस को कवर करो, मास्क लगाओ, ठीक है, ताकि वो अगर आप जैसे ब्रीथ करते हो तो कोई चीज़ आपके विद ब्रीदिंग अंदर ना चली जाए। सो दीज आर some steps you can take to avoid the chemical attacks as well as the biological attacks.